Good morning, children. Today we are going to start exercise 3E. Start from question number 1. Use prime factorization method to determine the HCF of each of the following. First part of this question is 12 and 18. First we find prime factor of 12. 2 6 is 12. 2 3 is 6. 3 1 is 3. We write here 12 is equal to 2 into 2 into 3. Now again find the prime factor of 18. 2 9s are 18. 3 3s are 9. 3 1s are 3. So we write the prime factor of 18 2 into 3 into 3. Now find the common factor. Common factor of 12 and 18. कॉमन का फैक्टर का मतलब ये होता है बच्चों कि जो इसमें भी है और इसमें भी है. तो दिस पेयर इज फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स 2 and 2. अब ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है. इट इज़ नॉट कॉमन. नाउ 3. सेकेंड नंबर इज 3. दिस पेयर इज कॉमन. So we write one time here. We write therefore HCF is equal to, we write one time 2 and one time 3. जो कॉमन फैक्टर होते हैं उन्हें हम एक एक बार लिखते हैं यहाँ पर. तो देन 2 3s are 6. So HCF of 12 and 18 is equal to 6. Clear? Now second part. Now third part. Second part is in homework. Second part is in homework. Third part 144 and 100. First we find prime factor of 144 and then find prime factor of 100. 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 2 6s are 12, 2 18s are 2 9s are 3 3s are 3 1s are. So we write here 144 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Now 100. 2 5s are 10, 0. 2 25s are 5 5s are 25, 5 1s are 5. So we take here 100 is equal to 2 into 2 into 5 into 5. Now take common. The 2 is common. Now next 2 also common. 5 is here but not here. 5 is here not here. 2 ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं यहाँ पर है लेकिन इस लाइन में नहीं है. सो वी राइट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 and 100 is equal to 2 and again 2. So HCF of 144 and 100 is equal to 2 multiply by 2. मैंने पहले भी कहा था कि एक पेयर में से एक बार हम इस नंबर को लेते हैं. तो 2 into 2 is equal to 4. तो its HCF is equal to 4. Clear everyone? Now again find the prime factor of 520. 2 2s are 4, 2 6s are 12, 0. 2 13s are 0. 2 6s are 12, 2 5s are
Now 65 is divisible by 5. 5 ones are 5, 5 threes are 15. Now 13 ones are 13. So 520 is equal to 2 into 2 into 2 into 5 into 13. Now find the factors of 1430. It is divisible by 2 first. 2 sevens are 2 ones are 2, 2 fives are 7, 1 plus 8 plus 5. It is not divisible by 3. So we take 5. 5 ones are 5, 5 fours are 20, 5 threes are 15. Now it is divisible by 13. 13 ones are, it is divisible by first 11. 11 ones are 11, 11 threes are 33. Now 13 ones are 13. So we write the factor of 1430, 2 into 5 into 11 into 13. Now common factor of 520 and 1430. देखिए कौन से कॉमन फैक्टर हैं, 2 and 13. Remaining numbers are not common. So we write 2 and 13. So it's HCF. Therefore, HCF of 520 and 1430 is equal to, we multiply the common factor, 2 into 13 is equal to 26. Its answer. Clear? Fourth part in your homework. देखिए आपका एक पार्ट तो आया था, पार्ट 2 and 4 are in your homework. Now find the HCF of 54, 60, 72, 80. Now find prime factor of every number. 54, 2 twos are, 2 sevens are, 3 nines are, 3 threes are, 3 ones are. Now 60, 2 threes are, 2 0, 2 ones are, 2 fives are, 3 fives are, 5 ones are. Now 72, 2 threes are, 2 6 are 12, 2 ones are, 2 eights are 16, 2 nines are, 3 threes are, 3 ones are. Now 80. सभी के फैक्टर हमने ऐसे फाइंड कर लिए. 2 fours are 2 0, 2 twos are 2 zeros are, 2 tens are, 2 fives are, 5 ones are. Now write prime factor of every number. 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3. 60, 2 into 2 into 3 into 5. 72, 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 80, 2 into 2 into 2 into 2 into 5. तो आप बच्चों देखेंगे एक सिंगल 2 ही ऐसा है जो 4 के 4 नंबर में हमारा क्या है, कॉमन है, जो सभी में आ रहा है. देखिए ये 2 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ये 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है. तो इसी तरह से कोई भी हमारे पास नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, जो 4 के 4 नंबर्स में फैक्टर आ रहा हो. तो वी राइट हियर कॉमन फैक्टर ऑफ 54, 60, 72 and 80 is equal to 2. Clear? Now HCF of 54, 60, 72 and 80 is equal to 2. HCF क्या आएगा बच्चों? Only 2. Now start the question number 2. Determine the HCF of the numbers in each of the following by continued division method. तो स्टूडेंट्स
by continued division method, first 1024 divided by the 348. अब आप देखेंगे 348 थ्री ज़ा नहीं जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 1044. सो वी टेक 2 ज़ा डिवाइड करेंगे. मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड बता रही हूँ HCF फाइंड करने का. तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 3 ज़ा 6. नाउ रिमाइंडर 14 माइनस 6 8, 11 माइनस 9 2, 9 minus 6 3. Now remainder is divisor and divisor we take here. ये जो 348 है इसको हम सेंटर में लेंगे और जो रिमाइंडर बचा था इससे हम इसको डिवाइड करेंगे. तो 328 वन ज़ा 328. नाउ रिमाइंडर 8 minus 8 0, 4 minus 2 2. Now again 328 divided by 20. 328. 20 1 ज़ा 20, 1 and 2. Now take 26 ज़ा 120. नाउ रिमाइंडर इज़ 8. रिमाइंडर क्या बचता है 8. तो अब 8 को बाहर लेंगे, 20 को यहाँ कहाँ लेंगे बीच में. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. नाउ 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4. नाउ 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ा 8. तो this 4 is HCF of 348 and 1024. We write here HCF of 348 and 1024 is equal to 4. Clear? Now it is continued division method. Now second part of question number 2. Greater number is divided by the smaller. 2 3 1 2, 1 ज़ा 2312. Now remainder 4 minus 2 2, 3 minus 1 2, 4 minus 3 1, 3 minus 2 1. Now we write this part inside. Now कितना जाएगा ये हमारे पास. 2 ज़ा जा सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. 12 minus 4 8, 10 minus 4 6, 68. Now divided by 68. 68 1 ज़ा 68, 12 minus 8 4, 10 minus 6 4. We take 2. नाउ 68 को 442 को डिवाइड करेंगे 68 से तो कितना जाएगा बच्चों. 68 6 ज़ा 6 8 ज़ा 48, 6 6 ज़ा 36 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 40. ठीक है. 12 माइनस 8 4 3. नाउ 34. वी टेक 68 हेयर. 34 2 ज़ा 68. Now HCF is this number. So HCF of 2312 and 3434 is equal to 34. Clear? Now third part has 3 numbers. तो सबसे पहले हम स्मॉलर लेते हैं, देन ग्रेटर देन स्मॉलर. तो 180 डिवाइडेड बाय द 144. 144 1 ज़ा 144, 10 minus 4 6, 7 minus 4 3. Now 144. 36 4 ज़ा
4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14। तो बच्चों यहाँ कितना आ गया 36। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर 192 डिवाइडेड बाय द 36। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 36 192 डिवाइडेड बाय 36। 36 5 जा 180। नाउ 2 9 minus 8 1 remainder 12। Now 36 divided by the 12. 12 3s are 36. So our HCF is equal to 12. HCF is equal to 12. Now question number 3 and 4 we will do in next video. Part 4 of question 2 is homework. In homework. ठीक है.